Hello friends, my name is Archana. Welcome to my channel Active Ant. आज का ये वीडियो मैंने उन किड्स के लिए बनाया है जो भी बुक रीड करना सीख रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि बच्चों को बहुत ही इजी वे में फोनिक्स साउंड्स के थ्रू बुक रीड करना कैसे सिखाएं। हम सब पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे बुक रीड नहीं कर पाते, पर क्या हमने कभी सोचा है कि बच्चे ऐसे क्यों नहीं कर पाते? तो चलो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली बच्चे A to Z लेटर्स तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जैसे A for एप्पल, B for बुक, C for कैट। बच्चे उन वर्ड्स को मेमोराइज कर लेते हैं, जबकि छोटी उम्र में इतने सारे वर्ड्स मेमोराइज करना इतना इजी नहीं होता। तो उसके लिए बेटर वे है कि हम उनको लेटर्स के फोनिक साउंड सिखाएं। तो चलो आज मैं इस वीडियो में लेटर्स A, B और C का फोनिक साउंड सिखाऊंगी। A का साउंड होता है अ, 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 जैसे अ, अ, एंड अ, अ, एंड अ, अ, एंड एप्पल, अ, अ, एप्पल, अ, अ, एप्पल। In this video, my 6-year-old daughter will help me in reading few words. Anvi, let's sing a rhyme of sound A. So, are you ready? Yes! Ant in the apple, ants in the apple, ah, ah, ah. Ants in the apple, ah, ah, ah. Ants in the apple, ah, 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 ah. Ants in the apple. Well done. Let's see some more examples of sound A. Anvi, let's read. Map. Map. Hat. Hat. Rat. Rat. Van. Van. Mat. Mat. Excellent, Anvi. Let's learn next letter sound. Sound of B. Ba. 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 Bat. Ba. Ba. Bat. Ba. Ba. Bat. Ba. Ba. Bag. Ba. Ba. Bag. Ba. Ba. Bag. Let's sing a rhyme of sound B. Anvi, let's read a rhyme of B sound. Baby has ball, 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 baby has a ball. Good job, Anvi. Let's see some more examples of sound B. R, bar, bin, 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 bun, bun, bed, bell. Good work, Anvi. Let's learn next letter sound C. Anvi, do you know what is the sound of C? Yes. Okay, let's see. Cat, cat, cab, 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 cat. Well done, Anvi. Let's sing a rhyme of sound C, Anvi. Cat in a cage, a cat in a cage, a cat in a cage. Cat in a cage, a cat in a cage, a cat in a cage.
A cat in a cage. A cat in a cage. A cat in a cage. Good work, Anvi. Let's learn some more examples of sound C. O. Cot. O. Cot. O. Cop. O. Cop. Car. Car. Cut. Cut. Ow. Cow. Ow. Cow. Good work, Anvi. Let's repeat one more time of sound A, B and C. A का साउंड होता है अ अ अ अ अ अ अ अ। B का साउंड होता है ब ब ब ब ब ब ब ब ब। C का साउंड होता है यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि एक बार अगर बच्चों ने लेटर्स के फोनिक साउंड सीख लिए तो वो नए वर्ड्स भी अपने आप रीड कर पाएंगे और उनको एवरी वर्ड्स को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होगी। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि इस तरीके को फॉलो करके किड्स 15 से 20 दिनों में बुक रीड करना सीख सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Goodbye, stay safe and happy learning.